तो जिसके बीच में रिपल्सिव फोर्स है जिसको हम लोग कहते हैं साई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसको हम लोग ये भी लिखते हैं साई स्टार। सो दिस स्टार रिप्रेजेंट्स एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो यहां से ये हमको सीखने को मिला कि इफ अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स लीनियर कॉम्बिनेशन करेंगे तो दिस रिजल्ट्स, दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपने मिक्स किया लीनियर कॉम्बिनेशन, जिससे मुझे क्या मिला, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, वन इज नोन एज बॉन्डिंग, द अदर वन इज नोन एज एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग दैट इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, सेम फेज ओवरलैप, और देयर इज अट्रैक्टिव फोर्स। तो जो अगर ये अट्रैक्टिव फोर्स है दोनों के बीच में, जिसका नाम रखा गया बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो अब दोनों के बीच में इंटेंसिटी विल इंक्रीज। तो अगर ये इंटेंसिटी इंक्रीज कर गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मोर बिटवीन द टू, जिसके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है, तो जिसका एनर्जी इज ऑलवेज लेस देन द एनर्जी ऑफ एंटी बॉन्डिंग। तो एंटी बॉन्डिंग में ऑपोजिट फेज ओवरलैप है, देयर इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, और रिपल्सिव फोर्स है। रिपल्सिव फोर्स की वजह से एनर्जी ऑफ एंटी बॉन्डिंग इज ऑलवेज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो देखो व्हेन वी टॉक दिस ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी ऑफ psi bonding orbital is always less than energy of anti bonding molecular orbital। तो रीजन आपके सामने, bonding molecular orbital attractive force energy is decreased, potential energy of the system is decreased, anti bonding molecular orbital repulsive force, तो because of this repulsive force potential energy of the system increase करेंगे। तो energy बॉन्डिंग का हमेशा कम होगा, एंटी बॉन्डिंग का हमेशा ज्यादा होगा। तो दो अगर मॉलिक एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स किया है थ्रू लीनियर कॉम्बिनेशन, जिससे टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, वन इज नॉन एज बॉन्डिंग जिसमें अट्रैक्टिव फोर्स है, द अदर वन इज नॉन एज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसमें रिपल्सिव फोर्स है। तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन है। अच्छा, व्हाइल डिस्कसिंग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये भी डिफाइन किया था, वेव का जो एम्पलीट्यूड है ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, बट इलेक्ट्रॉन का जो प्रोबेबिलिटी है, दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट बी नेगेटिव। तो या तो हम लोग कहेंगे भाई देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन है, if not probability is zero। तो since the probability of finding electron cannot be negative, rather than simply this psi, we'll take the help of psi square which represents the probability। तो हम लोग चलते हैं, तो suppose we have psi, तो ये एम्पलीट्यूड है, तो अगर ये नेगेटिव है देन प्रोबेबिलिटी दैट इज साई वन स्क्वायर हुआ, साई टू अगर ये एम्पलीट्यूड नेगेटिव है, देन अगर मैं इसको साई स्क्वायर करेंगे देन दिस बिकम्स पॉजिटिव। सो दिस साई वन स्क्वायर, साई टू स्क्वायर, दिस रिप्रेजेंट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस एटॉमिक ऑर्बिटल, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस of atomic orbital psi 2। But look at this, let's suppose this is A, this is BA, that is individual atomic orbitals का probability is psi 1 square as well as psi 2 square। Now we take this bonding molecular orbital, so therefore look at this, psi 1 plus psi 2 जिसका नाम रखा गया बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल।
अब मैं इसका इंटेंसिटी स्क्वायर कर देता हूं, तो therefore look at this, psi bonding square will be equals to psi 1 plus psi 2 whole square. So this comes out to be psi 1 square plus psi 2 square plus 2 psi 1 psi 2. Now look at this equation C, ये मान लेता हूँ equation C. Now simply अगर मैं intense probability of wave function 1 and probability of wave function 2 add करते हैं, तो this becomes psi 1 square plus psi 2. But after this linear combination, अगर मैं linear combination use करता हूँ, then this linear combination, तो bonding molecular orbital का जो probability है, this increase by a factor of 2 psi 1 psi 2. ये तो individual और A, individual of 2, तो A plus B हुआ, प्लस इससे ज्यादा एक टर्म इंक्रीज हुआ 2 psi 1 psi 2. तो दिस इज, हाँ तो ये A प्लस B, तो ऑब्वियसली दिस वैल्यू है, दिस वैल्यू, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन psi 1 स्क्वायर प्लस psi 2 स्क्वायर. जो इंडिविजुअल वेव फंक्शन का जो प्रोबेबिलिटी का एडिशन है, उससे ज्यादा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का इंटेंसिटी इंक्रीज हुआ बाय ए फैक्टर ऑफ 2 psi 1 एंड psi 2. अगर मैं ये ले लेता हूं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल psi स्टार which is equals to psi 1 minus psi 2. So therefore psi star square, that is probability of anti-bonding molecular orbital, ये देखिए psi 1 minus psi 2 square, that is psi 1 square plus psi 2 square minus 2 psi 1 psi 2. Look at this equation D. तो this anti-bonding molecular orbital का जो probability है, that is less than the summation of probability of individual wave function psi 1 square by a plus psi 2 square by a factor of 2 psi 1 minus psi 2. तो यहाँ पे minus 2 psi 1 psi 2 से डिक्रीज हुआ. तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो प्रोबेबिलिटी है, दिस प्रोबेबिलिटी किस फैक्टर से डिक्रीज हुआ? बाय 2 psi 1 psi 2 से डिक्रीज हुआ. whereas बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितना इंक्रीज हुआ? इंक्रीज बाय ए फैक्टर ऑफ 2 psi 1 एंड psi 2. दैट मीन्स ये जो 2 psi 1 एंड psi 2 जो फैक्टर है, जिसको हम लोग डिफाइन करते हैं ओवरलैप इंटीग्रल. दिस टर्म 2 psi 1 psi 2 psi 1 psi 2, this is known as overlap integral. तो in case of bonding molecular orbital, overlap integral is positive, तो intensity increase, ये constructive interference attractive force by a factor of 2 psi 1 psi 2. In case of anti-bonding molecular orbital, the probability is decreased or intensity is decreased by a factor of 2 psi 1 and psi 2. Intensity क्यों decrease हुआ? Because of destructive interference and repulsive force. दोनों एक दूसरे को रिपेल किया. तो अगर रिपेल किया तो between these two intensity क्या होगा? Decrease होगा. तो these 2 psi 1 psi 2 is a very important factor that decides this linear combination of atomic orbital. So rather than simply adding the probabilities of individual wave function, when we undergo linear combination of atomic orbital, either the intensity is increased or decreased
If there is a constructive interference, intensity increased by a factor of 2 psi 1 psi 2, that is known as bonding molecular orbital. अगर एक intensity decreased by a factor of 2 psi 1 psi 2, then that is known as destructive interference. So this factor is less than psi 1 square plus psi 2 square, that is simply summation of the probabilities of individual wave function. तो ये है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स. तो इसको ग्राफिकली वी कैन एक्सप्लेन, इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं. तो ग्राफिकली सपोज ये ड्रॉ करें psi 1 स्क्वायर psi 2 स्क्वायर इंडिविजुअल. तो सपोज दिस इज psi 1 स्क्वायर, ये psi 2 स्क्वायर. फॉर दिस ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो ये psi बॉन्डिंग ऑर्बिटल का इंटेंसिटी. तो इंडिविजुअल वेव फंक्शन psi स्क्वायर psi 2 स्क्वायर, जब ये कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस था तो यहाँ पे इंटेंसिटी था ना. अगर दोनों को मैं यूज किया लीनियर कॉम्बिनेशन, आफ्टर दिस लीनियर कॉम्बिनेशन यहाँ पे लिखी इंटेंसिटी यहाँ पे राइज कर गया. तो इंटेंसिटी बिटवीन द ऑर्बिटल्स और द बॉन्ड बिटवीन टू कंबाइनिंग एटम यहाँ पे इंक्रीज हुआ. तो दिस इज पॉजिटिव इंटरफेरेंस, that is intensity ग्राफ है, that is intensity और distance between the bond distance है. तो ये कंस्ट्रक्टिव है. Now going for destructive interference, suppose this is psi 1 psi 2. तो after this ये psi star square, this is psi 2 square, this is psi 1 square. Now look at this, before linear combination यहाँ पे intensity था, but after this linear combination यहाँ पे intensity is decreased. तो this is this factor overlap integral psi 2 psi 1 psi 2, यहाँ पे overlap integral is positive, intensity rise कर गया. जब ओवरलैप इंटीग्रल इज नेगेटिव तो यहाँ पे इंटेंसिटी यहाँ से यहाँ नीचे गिर गया. तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स. सो बाय दिस लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स वी डेवलप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसका नाम है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. सो दिस इज what we call as linear combination of atomic orbitals. Now coming to some of the important postulates.
of this molecular orbital theory. So let me rub this. To postulates of this molecular orbital theory. To first look at this, number of atomic orbitals combined is always equals to number of molecular orbitals formed. Number of atomic orbitals combined is equals to number of molecular orbitals formed. If two atomic orbitals mix करेंगे then this will give you two molecular orbital. If three atomic orbitals mix करेंगे तो this will give you three molecular orbitals. These atomic or molecular orbitals जो हम लोग डिफाइन किए, तो एनर्जी of psi bonding is always less than energy of psi star, that is anti-bonding molecular orbital, जिसको अभी डिफाइन किया था. Look at this. If suppose this is psi 1, this is psi 2, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये अनदर एटॉमिक ऑर्बिटल है. अब दोनों को मिक्स किया, मिक्स करने से दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना. एक का एनर्जी एवरेज एनर्जी से डिक्रीज हुआ. दिस इज व्हाट वी कॉल एज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. नाउ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसका एनर्जी इंडिविजुअल ऑर्बिटल से कम हुआ, जिसका नाम है साई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. जिसका एनर्जी राइज कर गया, जिसका नाम है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. सो दिस इज पोटेंशियल एनर्जी. सो potential energy of anti-bonding is always greater than the potential energy of the bonding molecular orbital. So this is energy. So that means जिसका एनर्जी कम है that is more stabilized, जिसका एनर्जी ज्यादा है means that is less stable. Now look at this, एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिक्स करना है, कंबाइन करना है. तो कंबाइन करने के लिए व्हाट इज रिक्वायरमेंट, कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो कंबाइन करेंगे, जिसमें ऑर्बिटल्स का जो ओरिएंटेशन है, लॉब्स का जो ओरिएंटेशन है, दोनों प्रॉपर होना चाहिए. ऐसा नहीं कि भाई एक एक्स ऑर्बिटल है तो एक वाई ऑर्बिटल है, तो एक्स कैन नॉट मिक्स विथ वाई. अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होना चाहिए, इन द सेम डायरेक्शन होना चाहिए. तो एक्स एक्स विल ओवरलैप, x and z, x and y, yeah, y and z cannot overlap. So the orientation of atomic orbitals to be mixed or to be combined should be in proper orientation. Proper orientation of atomic orbitals to be mixed. So orientation of lobes should be proper in same direction होना चाहिए. Number 4. Now look at this, atomic orbitals mix करना है and this will result in the formation of molecular orbital. तो जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो मिक्स करेंगे उसका एनर्जी भी ऑलमोस्ट सिमिलर होना चाहिए. इफ नॉट सिमिलर, दोनों के एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए. अगर एनर्जी बहुत ज्यादा डिफरेंट है तो ऑब्वियसली ये कॉम्बिनेशन वीक होगा. तो जब कॉम्बिनेशन वीक होगा तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन टेंडेंसी विल बी कम होगा. तो टू फॉर्म इफेक्टिव और स्ट्रॉन्गर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, द एनर्जीज ऑफ दीज टू एटॉमिक ऑर्बिटल शुड नॉट बी हैविंग लार्ज डिफरेंस और शुड बी अप्रोक्सीमेटली सेम. Energy of atomic orbitals to be mixed
should not have large gap. तो आई एम यूजिंग लार्ज गैप नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर एक्सेल आइडेंटिकल है तो वेल एंड गुड, इफ नॉट आइडेंटिकल है तो एनर्जी गैप ज्यादा नहीं होना चाहिए. तो आफ्टर दिस मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स विच गिव्स यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना तो वी हैव टू फिल इलेक्ट्रॉन्स इन दिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. अब इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है, तो इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. सो फॉर दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगेन वी हैव थ्री रूल्स, दैट इज होल्स रूल, Pauli's rule, above principle. So all these three principles for electronic configuration is also applicable to molecular orbital theory. So Hund's rule, Pauli's rule and above rule is also applicable to molecular orbital theory. तो जो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के जो रूल्स है वो यहाँ पे भी एप्लीकेबल है. तो फॉर दिस नाउ लुक एट दिस, वी हैव टू डिफाइन दिस above principle means energy order of various molecular orbitals of the energy order of various molecular orbitals. तो मैं आपको ऑर्डर दे रहा हूं. sigma 1s is less than sigma star 1s. So look at this. So 1s and 1s, two atomic orbitals से combine किया तो one bonding बना, another one is anti bonding. तो 1s overlap करने से sigma and sigma star बनेंगे. Now after this sigma 2s and sigma star 2s. So this is from the bonding with this anti bonding. तो ये 2s और 2s combine करने के बाद एक bonding and anti bonding orbital बना. After this 2s we have 2p. So sigma 2pz. If pz, now look at this, if z is considered to be the molecular axis, intermolecular axis है, तो z and z will form head on collision. अगर ये head on collision है तो this gives rise to sigma. Then remaining 2p orbital, look at this, ये if this is z z है तो this is perpendicular, तो ये क्या बनेगा pi और ये क्या बनेगा pi. So the remaining 2, that is pi 2px and pi 2py, दोनों का एनर्जी सेम है. ये यहाँ पे देखिए दोनों की एनर्जी सेम है, तो दिस इज वाई Hund's rule अप्लाई करेंगे. सेम ऑर्बिटल सिंगली ऑक्युपाइड बिफोर पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. इसके बाद पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, अगेन दोनों का एनर्जी सेम है, तो इसको हम लोग कहते हैं डीजेनरेट, सेम एनर्जी. तो पाई 2px पाई 2py डीजेनरेट, पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py अगेन degenerate orbitals. After this we have sigma star 2pz. तो look at this, p में we have three orbitals है x, y and z. तो 2p 2p मिक्स किया, 3 plus 3 6 atomic orbitals मिक्स किया, तो how many orbitals बना molecular 1 2 3 4 5 6 बना. 3 bonding 3 anti bonding. तो ये जो दो ऑर्बिटल्स हैं डीजेनरेट है और ये भी डीजेनरेट है, मींस हैविंग सेम एनर्जी. तो पाई 2px पाई 2py सेम एनर्जी,
pi star 2px, pi star 2py again having same energy. After this 3s में चले जाएंगे। तो फर्स्ट आपको ये दिमाग में रखना है कि दिस ऑर्डर जो मैंने आपको यहाँ पे दिया, ये ऑर्डर तभी फॉलो करेंगे इफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन्स है, इफ दिस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द मॉलिक्यूल इज ग्रेटर देन 14, अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर देन 14 है तो आप इस ऑर्डर को फॉलो करेंगे फॉर राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बट इफ द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन 14 तो ये ऑर्डर फॉलो करेंगे, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा स्टार sigma 2pz, then pi star 2px, pi star 2py, then sigma star 2pz। तो ये फॉलो करेंगे इफ टोटल इलेक्ट्रॉन इज लेस देन और इक्वल्स टू 14, 14 से बराबर है या 14 से अगर कम है तो ये ऑर्डर फॉलो करेंगे। इनमें आपके पास जो डिफरेंस दिखाई दे रहा है यहाँ पे देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक एज इट इज है सेम, ओनली डिफरेंस इज यहाँ पे डिफरेंस दिखाई दिए, ध्यान से देखिए ये जो पोर्शन में आपको डिफरेंस दिखाई दिए। तो इफ इलेक्ट्रॉन इन द मॉलिक्यूल इज ग्रेटर देन 14 तो 2pz की एनर्जी कम है, पाई 2px, पाई 2py की एनर्जी ज्यादा है। बट इफ द इलेक्ट्रॉन in the molecule is less than or equal to 14, energy of pi 2px, pi 2py is less than the energy of sigma 2pz, बाकी rest of the order remains as it is है। तो this energy order you have to follow, that is the above principle or energy order of various molecular orbitals जो atomic orbitals से develop किया, and you have to memorize this and based on this will develop electronic configuration of the molecule। तो अगर आप इसको डायग्राम फॉर्म में बनाना है तो इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल और लेट्स टेक दिस इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो चलिए 1s 1s दोनों मिक्स किया, तो ये 1s 1s, तो ये सिग्मा 1s बॉन्डिंग, दिस इज सिग्मा स्टार 1s। After this 1s we have 2s, यहाँ पे 2s है, this is 2s, this is also 2s। now 2s mix किया तो this gives you 2 molecular orbital, this is sigma 2s, sigma star 2s। after this 2s we have 2p, तो 2p में आपके पास 3 ऑर्बिटल्स हैं। now this gives you तो ये सिग्मा 2pz तो ये हुआ पाई 2px, पाई 2py, ये पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, and this is sigma star 2pz।
तो ये आपके पास एनर्जी ऑर्डर है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स, दिस इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये ऑर्डर तभी फॉलो करेंगे, ये पोटेंशियल एनर्जी है, इफ टोटल इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन 14। अगर टोटल इलेक्ट्रॉन लेस देन 14 है, then the order to be followed is here. We have atomic orbitals. Atomic orbitals, in between these two we have molecular orbitals. Usually 1s, 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 1s. That is sigma 1s, sigma star 1s. After this we have 2s, this is sigma 2s, we have sigma star 2s. After this we have 2p. Now this is for inner electron greater than 14 equal to, but electron less than 14. ये 2p हुआ और ये 2p. So this is pi 2px pi 2py sigma 2pz pi star 2px pi star 2py sigma star 2pz. तो ये ऑर्डर इफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन और इक्वल्स टू 14, एंड ये है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज पोटेंशियल। तो एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल इंक्रीज कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू अबाउट प्रिंसिपल हम लोग जो डिस्कस किए, व्हेनेवर आप इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करेंगे तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड करेंगे, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे किया है तो उसके बाद नेक्स्ट ऑर्बिटल्स में मूव करेंगे। तो दैट इज अबाउट प्रिंसिपल, व्हेनेवर यू हैव टू फिल इलेक्ट्रॉन्स इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लोअर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल शुड बी फर्स्ट फिल्ड अप फॉलोड बाय हायर एनर्जी ऑर्बिटल. नाउ Pauli's rule says in any molecular orbital a maximum of 2 electrons can be filled. A maximum of 2 electrons can be filled in any molecular orbital, and these 2 electrons should be having opposite spin similar to atomic orbital. जैसे atomic orbitals में 2 electrons रखते थे with opposite spin. In the same way, in any molecular orbital only 2 electrons can be placed, and these 2 electrons should be having opposite spin. Hund's rule says if there is same energy level orbitals, then before pairing सबको एक एक इलेक्ट्रॉन्स रखना पड़ेगा. That is Hund's rule. तो look at this, ये एनर्जी लेवल सेम है, ये भी सेम है, that is डीजेनरेसी है. तो जब तक ये सिंगली ऑक्युपाइड नहीं करेंगे इसमें पेयरिंग नहीं हो सकता है. ठीक है, that is Hund's rule. So all the three rules will be applicable to molecular orbitals theory. तो ये है molecular orbitals theory. Now the next part is application part. इस molecular orbitals theory को हम molecules में कैसे apply करेंगे? Okay, so this is the energy box diagram. Energy box diagram of molecular orbitals. तो आपको ये ऑर्डर
प्लीज आपको ये याद करना है, दिस इज इंक्रीजिंग ऑर्डर which orbitals are having same energy थी, pi star 2px, pi star 2py is having same energy, pi 2px, pi 2px is having same energy दोनों में. But in case of electron having greater than 14 electrons, energy of 2p sigma 2pz is less than pi 2px or pi 2p1. Whereas if the electron energy, if the total electron is less than or equal to 14, the energy of pi 2px and pi 2py is slightly less than energy of 2pz. बाकी रेस्ट एज इट इज है, यहाँ से लेकर यहाँ तक सेम है और इसके ऊपर भी सेम आएंगे. सो दिस इज energy diagram or above principle of molecular orbitals form. तो ये molecular orbital है, इसको यूज करके हम सम प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करेंगे. ओके